conducting the plenary session. Once again, uh, welcome you back to this plenary session where we have experts from different institute organizations to represent mining fraternities. Topic of the today's plenary session discussion is basically sustainable open cast coal mining way forward. As you know that there is a proverb, what the caterpillar calls the end of the world, the master calls a butterfly. This is a proverb, this is a statement given by Richard Bach. The same is the status with our coal sector. Coal sector, as you know, is facing a whole lot of challenges. As you know, that United Nations Climate Conference in Scotland on November 16th of 2021 included representatives from 200 countries to deliver the COP26 Glasgow Climatic Pact, meant to ensure the world still has a chance to avert the worst impact of global warming. This is where a dispute over coal nearly sank the climate pact, but coal emerged a winner, showstopper and game changer in the global energy matrix. For the near future and especially in India's energy matrix, that accounts for nearly 55 to 60% of its energy consumption. It was a historic movement. Whenever China, India and other developing nations reach in coal reserves, were able to force a phase down instead of phase out for the dirty fuel called coal. That the world mandate against burning and emitting carbon dioxide emissions, and we call it our black diamond, while it faces the climate transition risk. Under such circumstances, to tide over this energy transition to greener trajectories and fulfill the Panchamrit goals, India's commitment response at COP26, it addresses the Go Green Coal. The 5 nectar element, that is Panchamrit, of India's climate action are reach 500 gigawatt non-fossil energy capacity by 2030, 50% of its energy requirement from renewable energy by 2030, reduction of total projections 1 billion tonnes from now to 2030, reduction of carbon intensity of the economy by 45% by 2030 over 2005 levels, achieving the target of net zero emission by 2070. Now, under these circumstances, we, the coal sector, the coal miners, the coal companies are poised. At this juncture, when the country needs coal as our basic energy matrix, main focus towards the coal production goes towards open cast coal mining. Open cast coal mining, as you know, that is full of challenges. May it be land, may it be the social requirement, may it be
the OV removal, the efficiency of mining, the cost of production, the limited requirement of different parameters which restricts the coal production. As on date, coal mining, we are generally, through open cast mining, we are going for 95% of its coal production. At this juncture, when we stand humbled with the coal sector's performance towards open cast mining, and we have a strong impetus to increase our coal production to a level as our coal ministry has given us a mandate that Coal India to reach a 1 billion target by 25-26 and the country to reach 1.5 billion ton coal production by that time. We have a very learned group of experts here on dais to decipher, to talk on this topic, and we want to make some discussions on this, and I request the vibrant audience to also participate in the discussion. First of all, I request our eminent engineer, now our Director Business Development from Coal India Limited, who has a wide experience of coal, use of coal or diversification of coal from the coal sector. He was earlier in oil sector, later on to address the different diversified impact. So I'll request our Honorable Director Business Development to talk on the diversification issues. We have in our panel Director Simfer, an expert in coal mining, particularly in the blasting, where the blasting impact and the coal mining. So we'll request our Director Simfer, Dr. Misra, to speak on this topic. We have with us Director RD&T from CMPDI, an experienced mining engineer and expert in exploration and research and development field. Will request Dr. Arinjha to speak on this topic. We have two academicians here, one Professor Dr. Dev from IIT Kharagpur and Professor Dr. S.S. Rai from IIT ISM Dhanbad. Our honorable expertise on these academicians who will be talking on the coal mining, open cast mining and way forward. So I'll request one by one all our dignitaries on the dais to speak for a period of 5 to 10 minutes on the topic, and later on we'll put up a discussion on this topic. So first of all, I request Dr. S.S. Rai to come on the dais, please. Thank you, Dr. Sinha, and also the distinguished dignitaries on the dais. So the topic for today's plenary session is the sustainable mining and way forward. It's a very key topic.
And probably at the philosophy level, it talks about the holistic approach to the production process. Whatever we produce, the approach should be holistic. When we say holistic, because we are here to make the productions, to produce coal. So production is the focus point. But when we say the sustainable mining, basically we mean that production with due care to the environment. Particularly in a company like NCL, which moves hundreds and hundreds millions of earth. Like in the morning I was hearing, this year NCL moved overburden to the extent of 450 million cubic meters. It's a huge quantity. I don't think you separate mining activity, the all earth movement in the country together will be less than this. So that's the size of the probably material we are moving. And associated with this would be a lot of problem related to the environment. And so beginning from the production, we also talked about in the morning, our Chairman Coal India said that the digitalization. So the whole purpose was how do we increase productivity of our mines? And probably to make our operation efficient, digitalization is one way. Otherwise, we would not be able to compare various scenarios of production, whereby we can optimize the way we move our overburden or the selection of the equipment. So digitalization is one thing which will lead to the automation, and therefore I think it will have an impact on the operational efficiency. So we have to look for the digitalization, and Chairman Saab also said that probably we are not talking about the digitalization of Industry 3.0, which is already there for more than 3 decades. We talked about the ERP. ERP came in late 90s. All those modular system, OI, TDS, I think the primitive version was there in Jayan project way back in 1988. Things have been advancing. But when you talk about the Industry 4.0, it's not about the technology per se. It's about the integrating the technology. It's a new approach of using the technology. Like one of the examples beautifully given in the morning, can we integrate our ERP with the lower level information, like below the line where the operation happens, where we have the modular systems, we may have the mine planning systems. Can we have a seamless integration without intervention of people? Currently in most places, what is happening, like you have an ERP system, a large number of people busy with handling the Excel sheets of the information and uploading it. So by the time they upload and the information goes to the corporate management, maybe that 15 days is lapsed. The decision which should have been taken on day 1, people come to know about or tend to take after 15 days. So this is integration is very important, and we are in that era. Industry 4.0 or mining 4.0 is all about the integration, and the net outcome is increasing operational efficiency. So this is one point which is ingrained in sustainable mining. Now coming to the aftermath, like the result of the opencast mining, as I said, 450 or 5, considering coal and overburden together, it's almost close to 550 million cubic meter. Huge land degradation. And it's a severe, very big environmental footprint. How do we take care of it? As of now, most of the places where I go, I find a mindset like we'll develop mine into a park. It's a very good initiative, but it's a post-closure activity. We have done the mining. Now probably time has come. We have to start closing the mine from the day 1. We have to plan the production along with the rehabilitation. There has to be a tight integration of reclamation and closing the mine along with we produce.
So it's no longer the post-mining closure. We can't allow the whole land to remain degraded for 30 years and then go for the post-closure, closing the activity with all those fancy words. So that's one area where I would like to focus, that integrate your reclamation planning with mine planning, very tight integration. If mine plan goes, rehabilitation plan should also go. And this is, and of course, yesterday I was going to Amlori and I was passing through that road. I could see many opportunities where we could do the plantation. You see, we have to save this planet also for our future generation. And plants, what we talked about, the emissions, global warming gases and all that. Let me tell you, plants are the biggest sink of all those global warming gases. So we have to bring in the mindset where we see the open space, put the plants. Not only the plant, but the right plant. Because many places I have seen, being a member of, say, Environmental Appraisal Committee, often we come across, in the name of plantation, any plant species being planted. That's not the way. We should try to plant only the endemic species, which are local, native to that soil. So that's very, instead of planting, start planting like the eucalyptus, which is not our species, is an exotic species. It comes from somewhere from the South America. It sucks the water from the land. So I'll be coming to the water problem later on. But the plantation, it saves on two accounts. But the account that we are discussing, it helps sink and also make the greenery. Next problem, because we are moving a lot of volume, is going to the air quality. Severe impact. CMD Saab was saying that we are already severely polluted area. Singrauli is considered a severely polluted area. Means quality of air is very bad in terms of PM10 or PM2.5, whatever way you define it, it's really bad. So again, we need to, along with taking the mitigation measures, which I was really happy to see that I could see, like the fogs flying on the roads, spreading the, say, water, and which has an impact on suppressing the dust. But probably the plantation that we do, plant also has a lot of capability to arrest the dust, not getting into the atmosphere. So we have to have a multi-pronged approach here. And it has to be holistic. Right in the beginning I said, sustainable mining means it's going to be it has to be very holistic. It will have the technology, it will have all the components of environmental degradation and plus the social aspects. So after the air quality, this air quality that we have talked about, the fugitive dust in PM10 and 2.5 is a local environment. But we have been hearing from the morning, global warming. It's a global environmental problem. Whether we accept it or we don't accept, it's a reality. World is concerned about it. Global warming is a reality today. We can see every day in the newspaper the way season is changing across the globe. Where there was no rain, there is raining. Where there used to be a lot of rain, that region is becoming dry. These are some of the results of global warming. And mining industry per se, particularly the way we do mining in NCL, is a hugely energy intensive. We consume a lot of fossil oil for running our diesel equipment. We consume a lot of electricity when we operate the 6.6 kV driven drag line, shovel and etc. Can we start thinking about replacing some of these machines with electric machines? Maybe that, and a lot of research is going on, because if you take the name of the big company like the Anglo-Americans, they have a target and their net zero target is slightly different. Their net zero is not that we emit and then put solar plants to neutralize it. No. Net zero means we don't produce any emission from any of my operations. So they are switching towards the hydrogen technology, green hydrogen technology. No more fossil fuel, because the moment we use the fossil fuel, it's going to emit. And then countering it with the help of some renewable is not a long-term solution. So that's one area. Maybe in the local transport, because I saw a number of 35-ton trucks. Sir, I request
Another 2 minutes, okay. You see, please forgive me because a teacher, when he gets the dash, he goes on speaking. I'm sorry for that. Please forgive me, but I'll try to conclude. Thank you, sir. So that's one area. I will quickly come to the water. Water is a big crisis. I was hearing 2 days when I came yesterday. There was an EAC for the water, Central Water, Groundwater Commission. Water is scarce, it's going to be a big challenge. And when we mine, we disturb water in 2 ways. We disturb the hydrology in the form of drainage of the area, streams, nalas, whatever we define it, and the hydrogeology. We cut the aquifer and we lose the water. So we have to really be very mindful. When we design the mine, we have to ensure by different methodology. Worldwide, many things are happening and they are taking care of all these water losses. Drip irrigation is one. So likewise, there are many technology. We have to be planning all this right in advance before the start of the mine. And it has to be, as I said, it has to be the integral part of the mine planning and the development process. So water is also a big issue. Then come the social. Because most of the areas where mining is going to happen, we have the society. And most societies are little traditional society. They have their own culture, they have their own economy. Suddenly we start mining, we disturb their culture and also the economy. And of course a new economy comes, but this economy, like I have heard, probably NCL, in the next 20 years somebody was telling that NCL life is 20 years. So we have started one economic activity, but what after that? All these existing economic activities is going to go after 20 years, but people would still remain. So we have to start thinking about the alternative economy. We have to start thinking about the circular economy. And considering all these aspects that we have talked about, world has been taking a step. We are already in the era of ESG principles, environmental, social, and the governance principle. Worldwide mining companies are not being rated by what they produce or how much do they produce. What is their ESG ratings? How they are behaving as an steward to the environments, how they are taking care of the society when they are being disturbed, how they are governing their own people, their own employees. So these are all some of the parameters or the benchmarks which is coming in a big way, and we cannot afford to overlook it. So we have to be compliant to all these sustainable aspects. I can speak much more, but I honor the time, and this is what I have to say, and I'll be happy to take any question afterwards when other people finish. It will be my pleasure. Thank you so much. Hello. Now I request our professor from IIT Kharagpur, please. We have been honored to call upon stage Professor G.K. Pradhan from University. He is a mining veteran and he is a blasting expert. Of course, he is a mining expert altogether. So we are happy to have him in our panel. Thank you, sir. Thank you, sir. Can you run the slides? Thank you. I can change it from here. Do you have a changer, slide changer, or? Okay. Hello. Oh, okay. So it is not changing. Will it change? It's too far. Okay, I can ask you, you can change. Okay. Thank you, Dr. Sinha, for organizing this plenary session. I'm going to, you can change the next slide, not this one. Yeah, I'm going to take the sustainability in a different way, because I come from academic background. So sustainability in academics means different stories. So there is a cartoon you can see. I am taking a boy
who is studying very hard, maybe in your house also, from class 8 onward to enter into an IIT system. You know, he is working very hard, you are seeing him day in and day out, and finally, in the day comes and he joins IIT Kharagpur in mining engineering department. Okay, 4 years he studies, enjoys, he does everything, and then is the come in the final year, he has to decide which industry to join. Because we have many options. He need not have to join core industry, and that is what is happening. So in non-core sector, current statistics is maybe 90%, and this is not only mining. This is all branches. An electrical engineer does not like to work in an electrical industry. And 90% are joining in non-core sector, especially the data science sector. Okay? So there is a confusion there. Now, you go to next slide. Go to next slide. Just change to next slide. Okay. Now, once he join in, non-core sector, let's say that is what is happening. So, what is happening is industry is losing the talent. The talent which is coming out from an IIT system, and he is experienced in last 4 years in mining engineering program. You know, the IIT is very sad. We are very sad that he is not joining, but we move on because we have a next batch to graduate. The students, he need a job. It doesn't matter which sector, he just need a job. But who is the biggest loser here? I think if you see, a IIT system requires about rupees 30 lakhs for 4 years to graduate a IIT from IIT system, out of which 20 lakhs will be given by the taxpayers. This is entire us. We are making him a mining engineer for 4 years, and then he is not contributing. So if this is not unsustainable, then what it is? This is my first question to you. So the entire country, who is the taxpayers, are the loser. So you go to the next slide. So now I gave this talk. This is a slide taken from this. One time the DGMS has called me on digitization in their Hyderabad sector. So I take 2-3 slides from that presentation, and I think it is very much relevant to today's topic. So we need to cater those students so that they do not go out of our sector. We have to somehow keep them here. If not in the core production, whether we can keep them in other sector which is related to us. So one of the way, here I also bring the DGMS because we need their blessing also to implement this. You know, we talk about academia, industry, consortium and all these things. Many things are happening, I am not denying that, but a lot need to be done. And if you see the sectors wise, we do R&D, teaching and all this stuff. DGMS is doing the policy making and checking on the implementation. Mining industries are doing productions and all others. But there is a huge area in that where the interaction is possible, and I have mentioned some of them. So please go next slide. So what was one of the possible interactions? So let's say now the NCL has created a R&D sector, R&D cell. So if this R&D cell, let's assume, has a geomechanics cell and has a digitization cell, okay, under that umbrella. Now let's assume also DGMS has a research cell. This is just assumption.
okay, which may be implemented very easily. And we are in the academics. So if we now all interact, because an academician cannot interact with everybody in the industry. We need a cell to which we are going to interact. We want to understand the problem. Similarly, the DGMS, whoever in the research group, they will interact with us, and this is how a consortium can be built. Go to next. So now here it comes. So let's say those IIT boys who are reluctant to join in a directly production, but they are immensely talented, let me tell you that. I am not demeaning any student of us. We can keep them in this consortium in between the industry and the academic sector in the form of startups. And this is what I told that time, maybe about 5 years ago, but I think nothing happened after that. So this startup will be incubated either in an industry platform or in academic platform or both, and they will be supported at least initially from the industry, that because any students, when he graduates, he needs to have some financial backing from somewhere. That's why he is looking for a job. And let me tell you now, 40% students take loan. So they have to repay that loan. So they are under financial burden. They need a job. That we fully understand. So if this format can be done, what happened is they become our emissary, but they are fully working for the companies. Not directly, but indirectly. So this kind of startup ecosystem can be built. So this is a possible solution. I am not telling it is the solution. It is probably a solution. Go next. Now, lot of talked about Industry 4.0. We all know the journey, the Industry 4.0. So finally, the Industry 4.0 came to the fourth stage, where it is basically human is integrating with the machines. Now the fifth one is coming, where machine will interact with machine. Okay, a shovel will tell the dumper where to come. You will not do. He will say, I am waiting for you. So the dumper will automatically come to him. That is 5.0. So we are not there yet. In fact, in the world is not there yet, except some sector. Mining industry definitely not. We have not implemented 4 yet. So this is Industry 4.0. Now you go next. Now these are some cartoon I got from various sector, from internet. So how the mining has evolved. So the latest technology, if you want to say in underground format, it is probably the long wall, which at best we can say it is 3.0, at best. Now, if you are getting the data from this, from a long wall shearer and shields, and then somebody is controlling, a software is controlling that, that becomes 4.0. Next. So we need change. And let me tell you, the mining industry is very reluctant to change. But I think the crossroad has come that we need to think about change. And there is a consortium of this Society of Mining Professors. And 2019, they have published a wonderful book, booklet type. This Mining of the Future Beyond 2030. And where they said, we will become endangered species. We, the professors, not the industry. We will become endangered species if we are not changing ourselves, our curricula, our thought process. So we will become endangered because somebody, some other disciplines is going to take over mining, and we are already seeing that. So we are not alarmed yet, especially IIT Kharagpur, ISM, I can tell you, in the Premier Institute is still not geared yet to
to change rapidly. So the mechatronics, IT specialists, they are going to run the show, not us. Okay? Then we have to change and we have to adopt this technology. That barrier need to go now, that I cannot do IoT. That barrier need to go. Next. Change. Sir, you sum up, please. Yeah, I'm done. So this is the smart mining. I think all of you know, this is also a cartoon, very nice cartoon, that everything is digitized. Starting, this is for a metal mine thing, when a shovel is taking a bucket of material, it knows what is the grade of that material. It's starting there. So it's everything, until it goes to the crusher, everything is monitored and digitized. This is where we are heading, if we have not done it yet. Next. 3 more slides. You go next. Okay, so this is an example. I will just go through it in 5 seconds. There is a mine in Australia which is mined 400 kilometers away from Perth and fully unmanned. Dump truck is carrying, shovel is loading the truck. Truck is taking almost 600 kilometers to the port, completely unmanned. So this is already happening. Next. So I have, in my view, I have done some SWOT analysis, and I'm not, because of the time, I can discuss it later. You go next. So this is my final slide. So what I like to say regarding this sustainability. We will explain. Okay, you go before. One before. No, that one is fine. Yes. Okay. So what I was discussing, that the IoT system and this consortium between academia and industry and with startups, if that is to be taken, what is our strength? First of all, that group of talented students we can retain in the industry, not in the direct production, but what we are talking since morning is digitization. They will be immense help to us. This is number one. So this will do the skill development of the country in the mining sector, and possibly we are taking the help of the outside consulting agencies, that we can not only abolish, we can start export our knowledge to the outside world. If we create an ecosystem of this, let's say SRK, this is a company from UK. So why we cannot build a consulting firm, mining firm in our country with that kind of expertise? We have the talent, we have the minds, we have the capabilities. Only thing, we are not putting everything together. So threat is always that we look it from the half empty. ये हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा? Let us go for the outside. And another threat is to get the non-mining students into our sector. Like we need electronics, computer science students. So we can get that. As an academician, we can get it and develop that. This is a threat, but we can get it. Go next. So the opportunity, oh sorry. So these are the thing. So lastly, what I like to say is, the digital transformation is must. If we are not doing it, somebody else will do it. This is, I am talking to myself. Okay, you will require it. Industry will require it. If mining departments cannot provide it, you will get it from somewhere. I know very well. So
if we are, that means the professors and the academic and the research institutions, if they are not doing it, industry will get it from somewhere. So this is to us, I am telling. So this can be done, one of the way to start a good mining startups and building the skills. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, we are honored that our Honorable CMD is here in the auditorium. I may request him to come on the dais to share his views on this topic. Please, sir. Professor G.K. Pradhan. Sir, not more than 5 minutes. Sure. Respected Mullah Singh sir, Dr. Sahab, Mr. Das, Simfer Director Dr. Misra and my other colleagues from the academics. मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ का जिक्र करूँगा. मैं 2-3 चीज़ यहाँ प्रैक्टिकल बताऊँगा. जब भोला सिंह साहब joined here as CMD, I had the privilege of getting an invitation from him to talk about blasting improvement in the mines of NCL. It was a 1-week program. The valedictory was by all the functional directors. आज मैं जब स्टॉल में गया, रास्ता में खड़िया के हमारे कुछ मेरे क्लास में जो पार्टिसिपेट किए थे, कुछ छात्र मिल गए, those who are working in खड़िया. उन्होंने बताया सर आप जितने सजेशन दिए थे हम लोग 35 मीटर का ड्रैग लाइन बेंच में इम्प्लीमेंट किए एंड दी रिजल्ट्स हैव कम आउट वेरी फ्रूटफुल टू देम. मेरा एक ही स्ट्रेस है कि ट्रेनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस. During my visit to many countries, I found that they give more importance to training rather than any other aspect of production and safety, followed by safety. Even in some banking sector, they want to have what is your safety plan and training plan before they give you loan. So मेरा कहना है कि training इतना important है कि small ideas can be implemented in the field and you get the lot of benefit out of it. As far as Singrauli is concerned, मेरे ख्याल से यहाँ सब optimum level में चल रहा है. यहाँ कोई आके बोलेगा burden spacing बढ़ाऊंगा, sorry. यहाँ बहुत कुछ बढ़ चुका है. It is optimized over last so many years. Because my association is since 1983 till date. बीच में आना जाना चलता है. यहाँ कोई optimization जरूरत नहीं है drilling and blasting. The only thing that we have to motivate our people, motivate our downstream operations like shoveling, drilling, dodging and preparing the blasting phase. वहाँ अगर हम जोर देंगे हमारा blasting improvement हो जाएगा. Those are the gray areas, and by only training and emphasizing that, only putting explosive बारूद डाल के आप performance नहीं बढ़ा सकते हैं. You have to apply some brain and monitoring is equally important. मेरे को बहुत खुशी लगता है, मेरे उस क्लास में जितने blasting incharge join किए थे, majority of them are in contact with me. And CMD साहब भी बीच में कभी पूछते रहते हैं, how was it going on? तो मेरे को खुशी लगता है आज ये फोरम में बोलने के लिए. People are really energetic to give a better performance, use a better explosive, improving the powder factor, not only improving powder factor but reducing its impact on the high wall. ये high wall management in drag line phase is very important. And आज जो खड़िया का बारे में सुना, ये it is applicable to other places also. And I am telling you, nobody can further improve in your operation because you are on optimum level. The only thing is that you have to improve the training input to the people working in the front line. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, may I request Nanda sir, to share your views, sir. Technical team presentation, please.
Uh, Respected Hola Singh sir, my co-speakers on the dais and the audience. You know, it gives me a feeling that as if I'm getting into a 2020 match with 5 overs remaining, 100 runs to score, because I've got a flight to catch in the evening. But nevertheless, okay. I'm here to talk about sustainability in the context of Coal India or coal mining. But why? Why do we need this? We have been hearing since morning, yes. One of my co-speakers said about global warming. We need to catch it within, keep it within 1.5 degrees centigrade. Somebody is talking about Industry 4.0, and we all understand. You know, what is the population of the world today? Right now, when I'm standing here, it is around 7.9 billion. And what is the population of India today? 1.4 billion. Not bad. But, you know, we are a $3 trillion economy now, like what I said in the morning, and we are aspiring to grow. Why not? We have got all the rights to grow, make our lives better. No matter why, I mean, all these European, Americans and all the developed countries, why they can only be hypocritic. I mean, they had their share when they could, but now it is our time. But while we speak about these things, we also should realize this world is not only for us. We need to leave something for our next generation or generations to come. So that is where from sustainability comes. And it is okay. It is an emotional approach or emotional appeal. But if you look at from a business point of view, sustainability or ESG, how does it matter to the companies? 90% of the S&P 500 index companies published sustainability reports. So are we, Coal India. 86% of employees expect their CEOs to publicly speak out on important social issues. That's what we are seeing right from the morning. And 7 in 10 people globally support organizing consumer boycotts against irresponsible companies that we all see happening all over the world, right? Then companies that truly embed ESG in their business can experience higher returns, 5 to 7% from the market than the non-ESG driven companies. And who doesn't want profit? Who doesn't want margin? So do we. So ESG can really create value. One is an emotional pitch, but at the same time, as a business development board member, I also have to look at my commercial things and how do we improve the margin? How do we expect the life of this company or corporation? Definitely, sales and innovation, I need to look at the other revenue stream of revenues, which are green. It also improves the operational efficiency, valuation of the company. My cost of capital goes down. You know, nowadays bankers are not prepared to give you or fund projects which are not sustainable friendly. So same thing about cost of capital, capital access, risk mitigation, all those things are there. So commercially or to run a business on a sustainable basis, we need to address sustainability going forward. Next slide. We all know what we are doing in Coal India or what India is doing, but let's see what others are doing. I am going to take you through 4 examples. You must have all heard about BHP Group. They have got prompt awareness system or PASS for tracking as well as collision avoidance. I'll tell you today morning, our chairman has inaugurated a dedicated corridor for passage of coal trucks. That is one of the beautiful things I have come across in India. I think, sir, is that the first dedicated corridor in India for coal? Where you also give a space for public transport and keep one space or some space for MCL is already implemented. Okay. So that is also one of the initiatives, and the similar things has already been done by BHP Group. So it's called PASS. And then a PASS device in the form of RFID tags inserted in the helmet of the worker so that the device acts as an alarm to detect the proximity of any HEMM. So you avoid accidents.
hydrogen truck prototype, Anglo-American, is another big name in the mining industry. They have unveiled a 2 megawatt hydrogen battery hybrid truck that is designed to operate in normal mining conditions. And why I say is that hybrid hydrogen battery hybrid truck, we are producing so much of coal from out of which we can produce brown or blue hydrogen. I am sure you all know about what is the brown and what is the blue hydrogen. Brown hydrogen is whatever hydrogen we produce from coal. But if you capture the carbon and we sequester it, then whatever hydrogen we produce through the process is called as blue hydrogen. There is almost, if the cost of brown hydrogen is around $1.12 per kg, brown hydrogen, blue becomes $1.62 per kg. So you have to pay around 50 cents per kg, but it adds to the sustainability. So they have developed that, and Coal India going forward has got a plan to get into this green and brown and blue hydrogen to start with. Then power seed decarbonization program by WHALE. So whatever their emissions through decarbonization and residual emissions, they are trying to offset it by way of plantations and carbon markets. Carbon markets is a thing which is going to come in the near future, so which will lead to net zero emissions. And last example, what I want to give you here, again Anglo-American, their virtual reality training program. You must have heard about AR, VR, actual reality and virtual reality. So this is another way of, digitization and reducing your dependency on carbon friendly things, or you want to move away from carbons. Next slide, please. So for global miners, let's see what are the scope 2 emission intensities. Scope 2, when I say scope 2 emission intensities, it is basically based on the electricity consumed for doing the mining. As far as Coal India is concerned, scope 2 emission intensity of CIL you can see is almost at par with companies like Glencore, Yancoal. So we are not doing very bad. Ours is I think 10.65, whereas Glencore is 11.09 and Yan is around 9.65. But BHP is way high, 24.88, but they address a different kind of mining. So the climate action commitment, as whatever we have for 2070, CIL is planning to achieve our net zero by 2024 by way of installing 3 gigawatt of solar power generation. And going forward, next slide please. So what are the CIL's commitment on carbon emission and climate change? We are a producer of coal and we are not the end user, but nevertheless, CIL's emissions of footprint consist of production and transportation of coal and energy usage and adverse environmental impact due to mining of coal. So we need to have a more efficient way of mining the coal, and the second thing, which is logistics. We need to find ways whether we can do like inland water transport, we can use more of sea transport to make our product reach the destination at the same time, which can be more environment friendly. So CIL strives to achieve a net zero sum of negative and positive contributing factors at the earliest, and I think the first thing to start with will be our mechanized evacuation, cleaner transportation, usage of reducing energy and water consumption, clean coal technology. These are few ways and means of reducing carbon footprints. Next. So just to give an overview, I don't know how many of you know that we are starting in a big way into non-coal minerals. Lithium is very important for our EVs, and despite declaration by a Geological Survey of India of finding of 5 million tons of lithium more in Jammu, it is still a challenge to extract that lithium. So we are decided to get into 2 countries. We have targeted Australia and Argentina. So we want to take spodumene from Australia and brine from Argentina, process it and bring the SL6 to India and get into the battery manufacturing. That is one initiative Coal India is taking in a big way. So besides that, we are also trying to make forays into other like cobalt, nickel, which are going to contribute in a big way into EVs.
and other non-carbon applications. Then the second thing is creating evacuation policy, like what I just spoke about, you try to explore the other ways like inland water transport, road, sea road, those kind of things where you bring down the carbon footprint in logistics. CIL has already embarked on those areas. Then the third thing is we are also planning to increase our energy efficiency. Wherever we are utilizing fossil fuels, we want to reduce we want to reduce the specific consumption so that we will gain on energy efficiency. Then one more thing is that the dream thing child in Coal India is in the area of coal gasification. So they have envisaged 4 coal gasification projects, and one at WCL, one at ACCL, one at ECL, and one at MCL, Mahanadi Coalfield. Mahanadi Coalfield and WCL, they are going to produce ammonium nitrate, which is a product captive consumed in most of our mines. So I think we consume around 700,000 tons of mines, and we are plan of making around 1,000 tons of ammonium nitrate to take care of our captive requirements. Second thing is we want to supply natural gas or synthetic natural gas to urea plants. There are 34 fertilizer plants in India, and we import a huge amount of natural gas because we are not blessed with so much of natural gas in the country. I think 50% of the natural gas are imported, and we are vulnerable to the global fluctuation. Like yesterday Russia attacked Ukraine, the prices jumped up to $60 per MMBTU, which normally sells at around $10 to $11 per MMBTU. So to reduce dependency on natural gas, Coal India is thinking in a big way to get into coal to gasification route and to manufacture synthetic natural gas, SNG. Third product we have identified is dimethyl ether, which is going to be blended with LPG. In LPG also, India's requirement is 26 million tons, and we import around 15 million tons. So we want to start in a modest way of producing around 0.5 to 1 million ton. So these are the few initiatives we are taking in the area of coal gasification. Then green cover enhancement, I don't have to say we are into big way into planting trees. I think the numbers are somewhere around 145.4 lakhs plantations spread across 6,765 hectare area. So that's a big number. And Coal India is taking it very seriously, and we are progressively and aggressively planting trees. And one more thing I want to give kudos to my friend CMD NCL is conversion of OB to sand. Sir, that is a very, very novel idea of utilization of OB. It not only gives you a stream of revenue, but it also helps in ecology preservation. Otherwise people look at riverbeds. And what happens when you dig out all that sand from the riverbeds. And last but not the least, development of new and renewable energy segment. We are looking at forays into solar PV manufacturing value chain, contributing to Atmanirbhar Bharat. And at the same time, we are targeting 3,000 megawatt of generation of power through solar. Going forward, next. Yeah, that just now I said 145.4 lakhs of plantation. You can go to the next slide. CIL's other ESG commitments are low carbon coal. When I say low carbon coal is first mile connectivity projects where we are trying to reduce emission or air pollution by way of coal evacuation by conveyor belts and silos. Then adopting clean coal technologies such as coal gasification. So these are our ventures into low carbon coal. Looking at biodiversity, we want to prevent mining or dredging of nearby rivers, enhancing green cover, tree plantation, and development of eco parks and promotion of mine tourism. Looking at clean coal technology, I explained. Besides that, we are also looking at deployment of surface miners in opencast coal production, and investment in procuring machines that are more efficient and productive and having low carbon content. Overburden utilization, I said, mine water utilization is another area where we want to utilize all the water
I mean, after treatment, supplying to households and, you know, other irrigation applications. Next. Digitization, like, you know, we have seen in the morning, digitization, I just want to give you one example. 9 months back, I was in a company called Indian Oil Corporation, where I was there for 34 years. That company, in the year 2007 or 8, they, you know, initiated this digitization program. I think so far they have invested must be around 900 crores. And tell me, you know, what is the return they are getting every year? They are every year either saving or making 600 crores per annum. So just imagine, I mean, you spend 900 crores and you get 600 crores every year. I mean, you won't get a better business proposition. So I just want to say that yes, I mean, Coal India also has started. I mean, Durustab, we have started, and we are going whole hog in a big way. And I am thinking, I'm sure that we are going to reap a much better benefit than what IOCL has done. Yeah, next. This is one more important thing, is shifting from strategy to implementation. You know, formulating strategy is a very easy thing. You sit in the AC chamber and you apply your mind, you come up with some strategy. But ultimately, you know, unless it is implemented, the purpose of the strategy is lost. So, I say it is not only the job of companies or academia or, you know, or organization. You need the support of regulators or the government or the policy makers. Unless they give you the backing, it is not possible, no matter what we say here. Because we have seen with every government changing, policy changes. So that is another thing. I mean, my appeal would be that yes, academia, institutes, and we should also involve policy makers when we talk about sustainability. Yeah, so next. So yeah, I think I have almost covered most of the things, and I am in the 20th over. I've got 2 more balls to face. So what I want to say that yes, it is very, very important, and it is for survival of everyone. And I think everybody sitting under this roof are also convinced about it in their own way. It is only thing is that what I said last, strategy banana aram hai, but we have to implement it. So what I say, my philosophy is, it is all about 3 A's. It is adaptability, agility, and alignment. Or agility, adaptability, and alignment. You have to be agile, you have to be quick, because you know, you don't have much time left. You have to be adaptable. You don't have to invent the wheel again and again. If somebody has invented the wheel, you can always, you know, work on that without losing much time, be it, you know, any country or whether friends or foe. And third thing is alignment. Everybody has to be aligned. So everybody should work on a single focus, that we need to save the earth and we need to save the world, but we can't do away from mining, because we need these resources at any cost. Thank you very much. Thank you, sir. May I request, sir, 10 minutes, sir. May I request our director to pick up the words, sir. Thank you very much, Dr. Anindya Sinha sir. Respected Bhola Singh sir, CMD NCL, Mr. Nanda, Director Business Development CIL Headquarter, Mr. RN Jha, Director CMPDIL, Professor Debashish Dev, respected Dr. Anindya Sinha, Director NCL, Professor SS Rai, Professor GK Pradhan, other dignitaries of the dais, Mr. Malik, Director Technical NCL. I am really thankful to the organizers for providing me this opportunity, and I will be taking just a few minutes as what I have been asked.
just before the lunch. I don't want to take much time, so I'll to the next slide. Basically, I discussed in the inaugural address as well. Globally, fossil fuels contribute around 81% of the primary energy requirement. Everybody talks about that we need to have the alternatives of fossil fuels, but unfortunately right now we do not have any option. We have to continue, reason being around 80% as I stated. And if you look up in our country, it is 74% from fossil fuels. So it's really very difficult to get away from fossil fuels. We need to continue if the kind of expectation we do have from the economy, the growth of the country, we will have to continue with it, but with certain do's with which we will be able to achieve the target of growth which we do have. Next one. So there is an urgent need to reach a carbon neutral economy, and for that as discussed, rapid action is needed. All the industries need to act, not only mining, all the industries, and the mining industry has to play a key role, and that is the reason why we have gathered in here. And as discussed, this is the decade to deliver. So it is not about to talk, not about to discuss, not about to deliver, not about to round table discussions. It's about to deliver. So whatever is being discussed, we need to have some targets, and then we need to deliver those targets as what stated by the previous speakers. Next one. Why sustainable has been talked about. So I'm really if you say that it is just the talk, but reality, it's happening. So now the globally people have started feeling the pinch of global warming, and is being felt by everyone on the earth. Next one. As what discussed by Dr. Anindya Sinha about the Panchamrit being articulated by Honorable Prime Minister, and we have to abide by those targets which have been committed by us as a country to the global world. And what we need, are our current systems really geared up to meet the challenges as what, one is the education. What are we educating? Our curriculum system and the innovations. So these are the two major factors which will come up, and for every aspect of mining, when we starting from the exploration to the mine closure, all the steps, all the processes, all the operations, we need to work with academia, with industry, with research institutions, so that at every step we need to come up with an innovative idea wherein we can reduce our impact on the environment. So let it be air, water, land. It's not about the environmental impact, it's about the carbon footprint which we are creating in every aspect of our operation. Therein comes the importance of education and the innovation. And innovation, not necessarily we will be getting in from the incubatees or innovators. It will happen from the shop floor of the mining entities itself, wherein the few ideas which can be picked up, and then little modifications, little innovation will bring in or will reduce the impact which otherwise is happening around. And the second comes up, which is Atmanirbhar Bharat, indigenous technologies. Importing, if we start importing the technologies, ultimately we do become import dependent, and then ultimately what is expected probably that doesn't happen. As what discussed by the previous speakers about the critical mineral, when we are talking about the EV, it's all about the critical minerals, and we need to have some ways and means with which we will be able to produce or getting the critical minerals in the country itself, apart from importing the critical minerals. Next one. Yeah, next one. Next. Yeah, so how particularly the mining industry can achieve net zero or sustainable mining? The number one comes up planning, engaging and implementing, setting an emission reducing strategy, which Mr. Nanda has already talked about, that Coal India has already set in a target for itself, which has become part of the policy. And once it becomes part of policy, once it is there in our calendar by such and such year, we will be able to achieve
the policies will be framed at every level to achieve that, and that is what is happening with CIL and will also be happening with other mining industries, other mining entities which are in the business of mining of coal and metal both together. Doing more with less, driving efficiency, as what in the very beginning in the inaugural address of the chairman, he emphasized about the digitalization and automation which is happening around in NCL, and I think NCL is one of the most innovative subsidiary of CIL. That is what I have realized. So it's happening around in NCL, it's happening around in CIL. Next one. And cleaning up the energy supply, as what talked about Mr. Nanda, that CIL has already started setting up the solar plants and other renewables to cope up with the energy requirement of the industry. So that's what is cleaning up the energy supply, reducing emissions in the supply chain. That is also being talked about. First mile connectivity, it's happening around in the country, in CIL itself. Next one. Building a net zero world through products. This is about the, what products. So right now we are selling in coal. Instead of coal, the clean coal or coal gasification have been talked about. So we do have the gasification, we do have the coal to methanol, we do have coal to hydrogen. These are the projects which are upcoming. So instead of selling the direct coal, will be having underground coal gasification and CBM. So these are the technologies which will be carbon neutral or clean technologies so far as coal consumption is concerned. Then empowering boards, it is existing already, it is there in the policies. Making right investment is another important aspect wherein the initiatives have already been taken up and technologies are being implemented at CIL level for net zero economy and the transfer. As this conference from the beginning, we are talking about the transformative policy which is happening around, and very soon we will be on the track. Next one. We have talked about all my other previous speakers have talked about it, so just skip it. Please, next one. These are some of the projects wherein the CSIR SIMFER is involved in. We have talked about Khanjal, wherein the mine water being utilized for potable water as well as for irrigation. So the project was being built indigenously and being handed over to one of the subsidiary of CIL. Next one. This is the various projects which CSIR SIMFER is engaged in with CIL. Next one. Next one. Green energy from algae. This is another project which we have built and then handed over to the municipality, wherein electricity generation and crude biodiesel from algae has been demonstrated. Next one. Next one. Next one. Coal to methanol, this is another project which we are doing, executing right now, which has been which has been given by Niti Aayog, and we are working. Pallet scale plant is being erected, and very soon we'll be having production from that. So in next days we'll be in a position to go for the commercial scale. Next one. And for future of mining, zero harm, zero loss and zero waste is the policy with which as a mining industry we'll be moving up. Next one. Mining companies can lead the way to net zero future by setting ambitious target, committing to meaningful actions and collaboration or collaborating across the value chain, which was being discussed and is happening around. And right now is the time when we have to take a positive and proactive approach to safeguard the planet and change the way we do our business, business for good. And the proposed plan is to have you need to identify the technology, we need to have R&D investment, then pilot, then early implementation, commercialization. So these are the ways with which, after identifying the problems, we can rope in the research institutions, academic institutions,
which have got the capability, which have demonstrated their capability or their credentials, that they can be involved in, and we can deliver in the technology. Next one. So with this, I would like to thank once again to the organizers for providing me this opportunity. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. May I request Dr. Arindha to few words, please. Good afternoon, ladies and gentlemen, dignitaries on the dais, of the dais. देखिए, मैं ये सस्टेनेबिलिटी, चूँकि यहाँ प्रोडक्शन के लोग हैं ही, हमारी होल्डिंग कंपनी के भी लोग हैं, आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू सम फिगर्स जो आपको थोड़ा मजबूर करेगा कुछ नया सोचिए दुनिया में क्या हो रहा है। हमारी जैसे ही बहुत सी कंपनी है, वो क्या कर रहे हैं और हम कहाँ हैं आज। First thing, in our country, the contribution of mining sector or the mines towards the total GDP is around 1.5 to 1.75%. Whereas in the big country like Russia, USA, Canada, even your Brazil, Australia, China, it is either in the higher digits 7-8% है, 9% है, और जैसे चिली, पेरू, कोलंबिया वगैरह है, वहाँ डबल डिजिट्स में। हम आज भी जो भी माइनिंग कर रहे हैं, वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू जनरली द बल्क मिनरल्स जो बहुत शैलो डेप्थ में ही मिलते हैं, जैसे आयरन है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है, लाइमस्टोन है, एंड इवन द लिग्नाइट एंड कोल टू सम एक्सटेंट। हम डीप सीटेड या वेन डिपॉजिट पे जाते नहीं हैं। आजकल जोर सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है कोबाल्ट पे, कॉपर पे, निकेल, लिथियम, और ये सभी की कीमत इतनी ज़्यादा है आपके कोल से। कोल में हमें $80 से $200-250, चूँकि अभी ऐसा स्थिति है वो यूरोप में लड़ाई के चलते या और कुछ दूसरे रीजन से। और आप ये जानते हैं ये कोबाल्ट की कीमत जो है वो $70,000 पर टन है। ये आपकी निकेल जो है 22,000 पर टन है। उसी तरह लिथियम भी जो है 15 से 16 हज़ार है। हम लगे हुए हैं अभी भी 80 से 200 के बीच के चक्कर में। इंडिया में हम जो अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मैं कोल इंडिया तक अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखूँगा, 5% हम अंडरग्राउंड से कर रहे हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट का जो खराबी है वो कम होता है। ये चाइना में 95% है। वो 4300 मिलियन टन जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर या उनका तो कैलेंडर ईयर में हुआ है, उसमें से वो केवल 5% जो है ओपन कास्ट से, जिससे कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। वो अभी भी 95% अंडरग्राउंड से करते हैं। और आज भी हमारे कंट्री में चूँकि हमारे पास में दूसरा कोई सस्टेनेबल अल्टरनेटिव नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, तो हम आज भी जो है 57% जो है प्राइमरी एनर्जी हमारा ये फॉसिल फ्यूल से ही आता है, पर्टिकुलरली आपका ये कोल से। आप दूसरे कंट्री में देखें, मैं कुछ कंट्री का आपको नाम देता हूँ, जैसे फ्रांस है, उनका 70% आज भी बिजली जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है, और वहाँ कोई चेरनोबिल का एक्सीडेंट नहीं होता है। वो टेक्नोलॉजी पे इतना उनका अपना कॉम्पिटेंस है। उसी तरह आप नॉर्वे है, एक नॉर्दर्न यूरोप में, वो कंट्री बहुत रिच है आपका फॉसिल्स फ्यूल्स में, लेकिन वहाँ बिजली जो है वो ना गैस ना ऑयल से निकाला जाता है, केवल जो है एक्चुअली वो चारों तरफ से समुद्र से भी गिरा हुआ है, वो ऑलमोस्ट 100% जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है।
उसी तरह ब्राज़ील उतना बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका में, वो जो है अपना मैक्सिमम जो है वो हाइड्रो से ही करता है, फॉसिल फ्यूल पे नहीं जाता है। और हम लोग अभी बहुत कोई बोलते हैं कि कुछ हम लोग को डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहिए। कोल इंडिया में भी बात होती है, CMPDI में सभी सब प्रोडक्शन कंपनी एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं, कोल से जो लिक्विड या पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी ने यूज किया था, जब उसको चारों तरफ से एलिस फोर्सेस ने घेर रखा था। और अपार्थाइड रीजन में राइट फ्रॉम लेट 50s अप टू अर्ली 80s, ये साउथ अफ्रीका में एक कंपनी है सैसोल, साउथ अफ्रीकन सिंथेटिक ऑयल लिमिटेड, वो जो है कोल से लिक्विड बनाता था, पेट्रोल और डीजल बनाता था। और वो टेक्नोलॉजी ऐसे किसी को नहीं देगा। यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू डू इट। आज देखिए, जैसे आप लोग भी जान रहे हैं, बहुत दिन तक रशिया नंबर 1 था गैस प्रोडक्शन में, लेकिन जब ये 2010 के बाद से USA में ग्राउंड फ्रैकिंग की न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। आज देखिए वो रशिया से 1.5 गुना से ज़्यादा, अबाउट 900 बिलियन क्यूबिक मीटर लास्ट ईयर जो है वो गैस को प्रोड्यूस किया है। अब उनकी टोटल इकोनॉमी जो है वो गैस की तरफ जा रही है। कुछ न्यूक्लियर है और जो कुछ पेंसिल्वेनिया या कुछ और एरिया में जहां अभी भी कोल का है, वो कोल को रिजिड रखे हुए हैं। तो ये मैं अभी आप लोगों को जितना बताया हूँ, ये हम लोगों को भी आज नहीं कल, आज इंडिया में अभी तक हमारे पास में चूँकि कोल को या फॉसिल फ्यूल छोड़ के कोई नहीं है अभी प्रूवन टेक्नोलॉजी, लेकिन आज नहीं कल ये आना होगा। एक और चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे ईस्टर्न पार्ट में जो है हमारा पुराना ही था, पहले अपनी कंट्री में बांग्लादेश, और पीछे वेस्टर्न में पाकिस्तान। इवन पाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग मच मोर नेचुरल गैस देन अस। उसी तरह 2 साल पहले से बांग्लादेश हमसे आगे हो गया। हम लोग अभी भी वही 30 बिलियन में है, जबकि गैस का प्रोडक्शन इंडिया का लास्ट ईयर बड़ा है। बट वी आर लैगिंग इवन एक कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड ये, जबकि हमारे पास 7,500 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्टल लाइन है, जो कि इसमें नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में जो भी रीजन है चाइना का, वहाँ में हर तरह का बेस मिनरल मिलता है, ये बेस मेटल्स मिलता है, प्रीशियस मिनरल मिलता है। हमारे यहाँ जियोलॉजिस्ट बोल देंगे नहीं सर ये तो नेगेटिव जोन है, यहाँ नहीं मिलता है। हम लोग जब छोटे थे, याद कीजिए, ये बताया जाता था कि गोल्ड सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में होता है। आज आप लोग जानते हैं अपने कंट्री में लास्ट ईयर 1.2 टन हुआ है, जबकि चाइना जो नंबर 1 है वो 450 टन जो है गोल्ड प्रोड्यूस किया है। तो ये ऐसा नहीं है, ये इसमें हम लोगों की अपनी जो है इनकम्पिटेंसनेस या हम उतने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, कहीं हमारे में कमी है, इसीलिए हम जो है उनके बराबर में नहीं आ रहे। जैसे साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली, पेरू, कोलंबिया, आप कहीं भी जाइए वो लोग सब बेस मेटल में है, प्रीशियस मिनरल में। तो मैं आज के लिए मैं अपने ये जो भी हमारी इसे मैं विराम देता हूँ, और मैं आप लोग को सोचने के लिए देता हूँ कि मैं जो चीज़ आपको बताया, मैं इसकी कोई तैयारी करके नहीं आया था, लेकिन ये हर के जहन में है। ऐसा नहीं है, इतना बड़ा कंट्री, 7 जो वर्ल्ड में 7 लार्जेस्ट कंट्री है, 7,500 किलोमीटर हमारा कोस्टल लाइन है, और हमारे यहाँ मिनरल नहीं मिलेगा, ऐसा पॉसिबल है। थैंक यू। Thank you, Dr. Zia. Sir, today we are discussing on the Opencast mining and way forward. Sir, I will request our respected CMD sir, Sri Varanasi sir, to conclude this. Please put your hands together for our Honorable Chairman cum Managing Director. Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था। माइनिंग सस्टेनेबल बनाने के लिए
कुछ एलिमेंट्स हैं टू माय माइंड, मैन, मशीन, मटेरियल, और एक फोर्थ डायमेंशन है इन्वायरमेंट, जहां आप इस सब चीज़ों को सिनर्जी दे करके एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। मैं सुना मैन की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। मशीन का लिमिटेशन है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% रेयर केस में, 120% एक्सेप्शनली रेयर, उस रेटेड कैपेसिटी के बियॉन्ड कोई काम नहीं करता है। मैन में आ जाइए, मैन एक ऐसा रिसोर्स है जो अपने इंटेलेक्ट पावर के कारण सबको ओवरराइड करता है। तो फिर हमारे यहाँ कंट्री में प्रक्रिया बनी है कि इंजीनियरिंग का नॉलेज कौन लेगा? जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करेगा, या कहीं नहीं कहीं से आप मास को छोड़ करके इंजीनियरिंग का डिग्री लेते हैं या डिप्लोमा की डिग्री लेते हैं, तो आप इंडस्ट्री में आते हैं। इस हाउस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, लेडीज़ जेंटलमैन, सभी कभी ना कभी अपने ब्राइटर करियर को परस्यू करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास किया है। सो दिस इज़ फर्स्ट टेस्टिंग। तो फिर आप रैंकिंग करते हैं कि किस कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहिए। कभी आप इंस्टीट्यूट को प्रायोरिटाइज करते हैं, कभी आप डिपार्टमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं। मैं आपको इतना ही बता दूं कि सिर्फ मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है, इंस्टीट्यूट नहीं बिकता है। इंस्टीट्यूट एक ऐसा जगह है जहाँ की आपको एक इन्वायरमेंट देने की प्रयास की जाती है। उसमें हमारे लर्नेड प्रोफेसर्स होते हैं, टीचिंग फैकल्टी होती हैं, सपोर्ट स्टाफ्स होते हैं, और बाकी इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, अच्छे वर्कशॉप होने चाहिए, ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट करती है। लेकिन पढ़ना फंडामेंटली स्टूडेंट को ही पढ़ता है। करिकुलम इरिस्पेक्टिव कहीं भी माइनिंग की पढ़ाई होती है। चूँकि ये डेडिकेटेड सेशन है माइनिंग के बारे में, सिर्फ इसलिए मैं माइनिंग पर ज़्यादा बात करूँगा। तो अब स्टूडेंट यदि नहीं पढ़े, फर्स्ट ईयर से फांकी मारना स्टार्ट कर दें और सेकेंड ईयर तक जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े उसी इंस्टीट्यूट में भूल जाए, और हम लोग का सेमेस्टर सिस्टम का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। इंटेलिजेंट लोगों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप 4 महीने का सिलेबस आप 4 दिन में पढ़ करके पूरा कर सकते हैं। चूँकि जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके जाते हैं कहीं, उनका मेंटल कैलिबर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नॉट ऑलवेज। जस्ट लाइक ऐसा है कि 1 मार्च से आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया और बाउंड्री पर रह गए, इसका मतलब ये नहीं है कि बाउंड्री के बियॉन्ड जो रह गया वो आपसे लेसर इंटेलिजेंट है। इट्स अ मैटर ऑफ ओनली अपॉर्चुनिटी एंड मिसिंग बाय नंबर्स, जो इंडिया का सिस्टम है। तो फिर आपने पढ़ करके निकला तो पता चला कि आप हाफ कुक्ड प्रोडक्ट बना। मैं जस्ट प्रोफेसर देव से ही बात कर रहा था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम लोग सेम इंस्टीट्यूट से हैं और हम लोग एक हॉस्टल में रहे हुए हैं, इसलिए मेरा अधिकार है उनको बताने का। चूँकि वो आईटी के प्रोफेसर है, मैं आईटी से पढ़ा हुआ। तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होता है कि प्रोडक्ट तैयार हो गया लेकिन प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना। और ये मोरलेस सबके लिए एप्लीकेबल होता है। फिर माइनिंग इंजीनियरिंग करिकुलम यदि आप देख करके चलेंगे तो ऑल रिगार्ड्स टू प्रोफेसर साहब जितने भी हैं यहाँ, हम लोग पुराना चौथा पढ़ता है, प्रोफेसर भी पढ़ाता है, टीचर भी पुराना किसी से लेकर कॉपी मारेगा। और आजकल तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लाइन में पूरा डाल देगा और सब उसको कॉपी कर लेगा। हर एक बैच में 3-4 लोग अच्छे होते हैं जो कि पढ़ाई में बड़े मेटिकुलस होते हैं, और बाकी लोग सभी लोग कॉपी करते हैं उसका। ये हमारा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है। और हम लोग टेस्ट में भी कॉपी करना भूलते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर के साथ में हमारा नोट्स भी लगा रह जाता है उसमें। तो ये अपने सिस्टम का ब्यूटी है। लेकिन इंडस्ट्री के लीडर्स वहीं से बनते हैं। तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समय नहीं था जब आपने कॉलेज में गए। तो बहुत लोग तो पेरेंट के प्रेशर के कारण इंजीनियर बन जाते हैं, बहुत लोग का भाग खराब होता है कि अच्छा रैंक नहीं आता है तो माइनिंग इंजीनियर बन जाते हैं। तो दोनों तरह की बातें हैं, इसके एक्सेप्ट स्कूल ऑफ माइंस, बाकी लोग रैंक के कारण माइनिंग पढ़ते हैं। इंडस्ट्री में आने के बाद में एक माहौल देना हमारा काम होता है।
हम जितने भी सब एक दूसरे का मेंटर है। मैं कंपनी का CMD हूँ, तो हमारे मेंटर चेयरमैन साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं। उस तरह से ग्रेडेशन बना हुआ है। प्रोबेबली हम मेंटरिंग नहीं करते हैं और अपनी पुरानी दिनों को उन पर लादना चाहते हैं कि मेरे टाइम था तो कुछ नहीं था, अभी तुम्हारे टाइम में सब कुछ है। गाड़ी दे दिया, AC गाड़ी दे दिया, फर्स्ट क्लास गेस्ट हाउस दे दिया, TV लगा हुआ है, इंटरनेट फैसिलिटी है, लेकिन प्रॉपर मेंटरिंग आप हम नहीं, क्योंकि आपके पास में टाइम नहीं है। और टाइम जो यंग इंजीनियर्स हैं उनके पास में भी नहीं है, क्योंकि उनके पास में फेसबुक है, व्हाट्सअप है। वो दिन भर फेसबुक व्हाट्सअप में लगे रहते हैं और किसी तरह से अपने इंगेजमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। माइनिंग प्रोफेशन एज ए होल आप देखिएगा तो इजी प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट में आप काम करते हैं। जो भी माइनिंग इंजीनियर्स यहाँ हैं या जो माइनिंग से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हाफ बॉइलिंग होना पड़ता है फील्ड में, स्पेशली ओपन कास्ट माइनिंग में। ओपन कास्ट माइनिंग में आप देखते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि 55% कंट्रीब्यूशन ड्रिलिंग ब्लास्टिंग को होता है। हमारे इस सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे इंजीनियर्स हैं जो डिजाइन टू इम्प्लीमेंटेशन की मास्टरी रखते हैं, नहीं रखते हैं। इसका कारण क्या है कि कॉलेज में आपको पढ़ाया गया, लेकिन हो सकता है कि अच्छा नहीं पढ़ाया गया हो, लेकिन आपने सीखा भी नहीं, और जो कुछ सीखा उसको कभी प्रैक्टिस नहीं किया। तो यदि माइनिंग इंजीनियर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो चीज़ें एज इट इज रह जाती हैं, और फिर आप कन्विंस नहीं होने का एक एटीट्यूड जनरेट करते हैं कि मैं तो IIT का पढ़ा हूँ, तो हमें फंडा कैसे कोई दे देगा। आई विल टेल यू, आपके सुपरवाइजर ओवरमेंस के पास में बहुत क्रेजी आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उनके पास में अनुभव बहुत ज़्यादा है, लेकिन रीजनिंग नहीं है। वो आपको बोलेंगे तो बोलेगा क्या फालतू बात करता है, लेकिन आप अपने नॉलेज की सूडो सुप्रीमेसी को जस्टिफाई करने में दिन रात लगे रहते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल है, गोल डिफीट हो जाता है। तो ये हो गया मैन का पार्ट। तो मैं सुना प्रोफेसर देव को, उन्होंने बहुत फंडामेंटल चीज़ बोला, और ग्लोबली आप देखेंगे तो माइनिंग इंजीनियरिंग एजुकेशन का बहुत डिग्रेडेशन हो रहा है। रॉयल स्कूल ऑफ माइंस से स्टार्ट करके देखें, और रिगार्ड्स टू ऑल ISMites, IIT ISM धनबाद 9, सब जगह डिटोरिएशन हुआ है माइनिंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में, और उसके लिए कोई और नहीं रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये तो मैन की बात होगी। अब आइए मशीन मैं बराबर बोलता भी हूँ, और शायद आप लोगों को सुनने में अच्छा भी नहीं लगेगा दोबारा। एनसीएल का एक अपना कल्चर था। कल्चर क्या था कि यहाँ टोटली डिपार्टमेंटल वर्किंग होता था, और ये सब माइन बहुत पुराने माइन हैं, जो कि जिप्रो साफ रसा की एक प्रीमियर प्लानिंग एजेंसी है, जैसे अपने यहाँ CMBDL है, उन्होंने माइन को प्लान करके आपको दिया। तो प्लान करके तो आपको दे दिया, फिर इक्विपमेंट बना करके दे दिया। और वैसे इक्विपमेंट हैं जैसे अपने यहाँ विजय डगलन बोलते हैं, 1590 डगलन हम लोग बोलते हैं, 3 लाख आवर्स चल चुके हैं। आज के डेट में यदि कोई मशीन आप लेते हैं तो 20 ईयर्स के बाद में क्या चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन मशीनों को हम अभी भी चला रहे हैं। कहने का मतलब है कि मशीन का डिज़ाइन पहले रोबस्ट था, तो अभी क्या हो गया, अभी आज HEC आपको डेडलाइन देता है, और कमीशनिंग के बाद में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो मशीन ख़राब हो गया आपका। तो फिर आपने क्या किया कि चलो ट्राई करते हैं, इसको सप्लीमेंट करते हैं एक शॉर्टकट से। शॉर्टकट क्या बना, डगलन माइन की जो प्लानिंग की गई है कि डगलन चीपेस्ट मोड ऑफ माइनिंग माना जाता है ओवर रिमूवल के लिए। एक तरह से आप बोलें तो ये IPCC है, उठाइए बगल में डाल दीजिए। IPCC का जो बेल्ट है उसका लेंथ 100 मीटर है। 100 मीटर के लेंथ में आप मटेरियल को शिफ्ट करते हैं, और आज के डेट में भी इसका कॉस्ट माइनिंग चीपेस्ट आता है, क्योंकि ये अपने आप में एक सिस्टम है। इसके लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी ब्लास्टिंग कर दीजिए, अच्छे तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्लान कर दीजिए, फीडर्स पर रख के ध्यान रखिए, तो आप माइनिंग कर लीजिएगा। तो फिर हम माइनिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके स्पेयर्स नहीं मिलते हैं। फिर डिटोरेशन का हद यहाँ तक नहीं है, एक लेवल थोड़ा सा और चले जाइए कि बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट हैं, उनके स्पेयर्स इंडिया में नहीं बनते हैं। खास करके 10 क्यूबिक मीटर से बड़ी कैपेसिटी का इक्विपमेंट हम बनाते नहीं है। रादर 10 क्यूबिक मीटर का रॉ सॉइल हम नहीं बनाते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँगा जो खास करके CCL में काम करते हैं, EKG बड़ा फेमस मॉडल है वहाँ का, 4.5 क्यूबिक मीटर। आप उससे पूरा वर्ल्ड जीतना चाहते हैं क्या? अब आपकी तैयारी देखिए, 4.5 से ज़्यादा है नहीं। 100 टनी डंपर BML
बीएमएल के बंधु यदि होंगे तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, उनको ऑपरेटर चलाना नहीं चाहते, तो भारतीयकरण कैसे होगा? तो आप कमर्शियल से डंपर लेते हैं, कैटरपिलर से डंपर लेते हैं और उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो इंडिजनाइजेशन आपका फेल कर गया। स्पेयर्स आप ले नहीं सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारे क्लॉजेज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट होते रहते हैं। DPIIT का क्लॉज है, आप FTE का क्लॉज है, इतने सारे क्लॉजेज के बीच में आप हेल्पलेस होकर क्या बोलते हैं कि आप अपना प्रॉब्लम किसी और को दे दिया। तो लेने वाला कौन है? आपका बिजनेस पार्टनर। हम कभी कभी उसको आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं और रॉ वर्ड में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर आपसे आपका जो पेन था वो ले लिया, बट एट ए कॉस्ट, एट ए वैल्यू डिटीरिएशन। कॉस्ट चीपर उनका है। लेकिन अब आइए, मैं हाल में कुछ अपने माइंस हैं उनका लेबर कैंप नहीं बोल सकते, इट विल बी अनजस्टिफाइड, अनसिविलाइज्ड। तो मैं इनका कैंप घूमने का कोशिश किया। कैंप में क्या है, एक तरफ उनका रहने का अरेंजमेंट है, दूसरी तरफ उनका वर्कशॉप है, तीसरी तरफ उनका ETP प्लांट है। तो एट ए प्लेस पूरा माइनिंग दिखता है, वहाँ पूरा माइनिंग दिखता है। तो मैं सोचा कि भाई अंदर थोड़ा झाँक करके देखा जाए कि अंदर में इनकी क्या फैसिलिटीज़ है। देखने के बाद मुझे बड़ा थोड़ा सा पेनफुल लगा कि क्या हम लोग 1973 के एरा में फिर वापस चले गए जब कोल माइन का नेशनलाइजेशन हुआ था। दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग एट माइनिंग। अनदर एस्पेक्ट क्या है कि हमारे जो लोग हैं उनको हम बहुत बढ़िया सैलरी देते हैं, सोशल सिक्योरिटी ज़बरदस्त, नौकरी से कभी नहीं निकाल सकते अनलेस अनटिल आपको पीट ना दे। जब तक वो मिसबिहेव नहीं करेंगे या कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं करेंगे, आप उनको नौकरी से नहीं निकाल सकते। आप उनको टॉलरेट करते हैं। एट द सेम टाइम जो कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर हैं उनका जॉब का इनसिक्योरिटी है, उनके पास में फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस तरह का विरोधाभास हमारे सोसाइटी में क्यों पैदा हुआ? और इस तरह के 80% जो आपके लिए माइनिंग करते हैं, ये स्वयं को, हम सबों को सोचने का टाइम है। NCL के कंटेक्स्ट में आपको बोलना चाहूँगा, 1 जनवरी 2022 को मैं यहाँ ज्वाइन किया तीसरे फेज़ में। एक फेज़ में मैं एज ए जेट ज्वाइन किया, दूसरे फेज़ में मैं रिलायंस के लिए काम किया, तीसरे फेज़ में एज ए CMD आया। मैंने डिस्टिंक्ट डिफरेंस क्या पाया कि अपना प्रॉब्लम को हम हमेशा बोलते हैं कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे माइनिंग का प्रॉब्लम है, बोले नहीं मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक्सकेवेशन का प्रॉब्लम है। एक्सकेवेशन के लोग इक्विपमेंट को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे माइनिंग करेंगे? तो मैंने एक पूछा कि अच्छा ठीक है, जितना देर अवेलेबल है इक्विपमेंट, आप उसको बेस्ट यूटिलाइज क्यों नहीं करते हो? तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग गए। तो लोगों की परफॉर्मेंस मैपिंग होना स्टार्ट हो गई। तो मैं देखा कि एक छोटा एफर्ट से इसमें बहुत फेनोमिनल चेंजेस आया कि बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट की प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो गई। ये ऑन रिकॉर्ड है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो कि आपने देखा भी कि 362 मिलियन क्यूबिक मीटर के बदले में आपने हिस्टोरिकली 463 मिलियन क्यूबिक मीटर OB का काम किया। 100 मिलियन OB ज़्यादा करने का मतलब है कि एक सब्सिडरी के अंदर में दूसरी सब्सिडरी आपने तैयार कर दिया। ये मैं नहीं बोलता हूँ, चेयरमैन साहब ने खुद विटनेस किया और डिफरेंट बेंचेस को देखा। अब चेयरमैन साहब का देखिए क्रिटिकल व्यू आपने सुना के बेंचेस वगैरह बड़े ठीक हो गए। ये बेनिफिट हम सबों को तो मिल रहा है, लेकिन जो भी कल को यहाँ आएंगे, मैं एक बात करता हूँ हमेशा, सक्सेशन प्लान, तो सक्सेसर को इसको बेनिफिट मिलेगा और आप सेफली माइन को ऑपरेट कर पाइएगा। ऑपरेट के एस्पेक्ट्स की बात है, चूँकि यदि मटेरियल की बात नहीं करूँ तो अधूरी रह जाएगी। मटेरियल में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं इसके, जैसे आप OEM बोलते हैं, OPM बोलते हैं, OPS बोलते हैं, एक सोर्स है प्रूवन बोलते हैं। OEM, OPM, OES, इनका एक फाइलम का लोग है। वो कहीं से बना है, किसी ने OPM बनाया, उसको पकड़ करके कौन उस पर अपना वैल्यू एडिशन कर दिया, मार्केटिंग कर दिया, तो OPS हो गया। और फाइनली कस्टमर तक आपको एक इन्फ्लेटेड रेट में पहुंचता है, जिस रेट को आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि माइनिंग का लैंग्वेज एक होता है, आप जैसे भी कीजिए,
माइनिंग सिर्फ माइनिंग होता है, उसमें आपको इनपुट डालना है और आउटपुट आपको मिलेगा। ये कन्फ्यूजन में कभी मत रहिए कि इसको चलाने वाला गोल्ड मेडलिस्ट है या चलाने वाला 10th कभी फेल किया है, हार्डली मैटर्स। इनपुट चाहिए, आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये मान करके चलिए। तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, खास करके ये बड़े ड्रैगलाइंस हैं, बड़े सॉवल्स हैं, तो हम लोगों ने कैटेगराइज करके लगा कि नहीं, हम OEM से ही संभाल लेंगे। लेकिन अब उसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है कि बार बार आपको बोला जाता है कि मेक इन इंडिया क्लॉज को आप क्यों नहीं पालन करते। मेक इन इंडिया नहीं, हम लोग कॉपी इन इंडिया में मास्टर हैं। कोई यदि प्रोडक्ट आएगा तो उसको इम्पर्सनेट करके हम उसका डुप्लीकेट जरूर तैयार कर देंगे। और इस तरह के बहुत सारे हमारे यहाँ सप्लायर्स हैं जो कि हमें स्पेयर्स देते हैं, उनको चलना चाहिए 4 घंटा और चलता है 24 घंटा। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? तो मशीन की अवेलेबिलिटी नहीं रही क्योंकि आपके पास में मटेरियल बढ़िया नहीं था। तो टोटलिटी में देखिए कि 3 एस्पेक्ट जो मैन बोला, मशीन बोला और मटेरियल बोला, और ये तीनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करते। हो सकता हो कि बहुत बार हम लोग ओवर प्रेजुडिस होते हैं कि हमारा जो नॉलेज है परफेक्ट है। आपका नॉलेज यदि परफेक्ट है तो परफेक्ट आपका रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट क्यों नहीं आता है? कहीं नहीं कहीं 3 में मिसमैच है। और इन तीनों के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए काम करने के लिए। इन्वायरमेंट कैसा? हम प्योर पर से इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं जो एयर वाटर पॉल्यूशन एक्ट के अंदर में आता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे वातावरण की ज़रूरत है जहाँ तीनों चीज़ों को साथ में रह करके इनका हाईएस्ट इफिशिएंसी को लीवरेज कर सके। वो कैसे होता है? वो करने के लिए जो जहाँ काम करते हैं उनके बगल में एक इन्वायरमेंट बना रहता है। उस इन्वायरमेंट में आप कभी कभी अलाउ नहीं करते हैं कि दूसरे आदमी इंक्रोच करें। इंक्रोच इसलिए करते हैं कि आप हमेशा नॉलेज सुप्रीमेसी बताते हैं अपने आप को, जो कि आपके पास में नहीं है। यदि नॉलेज सुप्रीमेसी रहेगा तो इन्वायरमेंट आपके अराउंड नहीं रहेगा, कोई बैरियर नहीं रहेगा। जो आदमी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानेगा, मैं बराबर बोलता भी हूँ, यदि IIT के क्वेश्चन आपको आते हैं तो 3 घंटा काफ़ी है, नहीं तो 33 घंटा भी कम है, कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उस ऑरा को हम लोग को दूर करना चाहिए कि कैसा इन्वायरमेंट हम तैयार करें जिसमें बैरियर, नॉलेज बैरियर, अनुभव बैरियर ये नहीं हो। कोई भी फ्रीली किसी से बात करे, ईगोलेस बात करें, तो उसके लिए स्वार्थ आपको त्यागना पड़ेगा। हम लोग बहुत लोग स्वार्थ नहीं त्याग कर पाते हैं। हम लोग को हमेशा लगता है कि हम ये नकली काम करके अपने आप को सुपीरियर बना देंगे, तो नहीं होगा। नकली काम करके सुपीरियर बनाने का जो एक प्रचलन है आउटसोर्सिंग कंपनी में हमें देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है कि वहाँ बोलेंगे कि ठीक है, हम आदमी तो रखा है सुपरविजन के लिए, मैनेजर्स तो रखा है, लेकिन कभी आप उनका क्वालिटी चेक कीजिए, ग्राउंड जीरो लेवल चेक कीजिए, आपको बहुत निराशा होगी कि लोग कुछ नहीं जानते। और आप क्या बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो कॉन्ट्रैक्टर को रख लिया, मेरा काम खत्म। इंडस्ट्री प्रॉब्ली इससे नहीं रहेगी। एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि सस्टेनेबल माइनिंग करने के लिए इनोवेशंस NCL में इनोवेशंस करने के पहले सबसे पहले हम लोग का जो बेस लाइन है उसको ठीक करना पड़ेगा। ये मेरा स्टेटमेंट्स हो सकता है आप सबों को, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है। फैक्ट इस तरह से है कि आपने 2% डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन में इंक्रीमेंटल गेन किया। आप 20 साल पहले चले जाइए, 20 साल पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम उस समय की सिचुएशन भी ऐसी थी कि आपको इस कंडीशन में लाने को कंपेल किया। तो फिर फ्री ट्रेडिंग का वर्ल्ड आया कि बहुत सारी कंपनीज आपके इंडिया में आने लगी। मेक इन इंडिया का क्लॉज आ गया। तो मेक इन इंडिया का क्लॉज यदि आ गया तो उसमें क्वालिटी कहाँ रह गया? जब आपके पास में क्वालिटी नहीं है तो देसी चीज़ों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से BML के डंपर्स, जिस तरह से BML के डोजर्स, जिस तरह से BML के ग्रेडर्स, आप मजबूर हो करके इम्पोर्ट आपको करना पड़ता है। तो ये टाइम आ गया है, बहुत बातें करने के तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका मन क्या बोलता है। अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। आत्मा की आवाज़ सुनने के बाद में आप किसी का मत सुनिए, क्योंकि भगवान ने आपको नॉलेज दिया है, आप अच्छे कॉलेज से पढ़े लिखे हैं, आपने इंडस्ट्री में प्रैक्टिस किया है, तो आपकी जो पूंजी है, जो आपका विजडम है, वो किसी भी और सिचुएशन में प्रिवेल करना चाहिए। यदि आप प्रिवेल नहीं करते हैं तो प्रोबेबली आप इस जन्म में आप अपने प्रोफेशन के साथ में जस्टिस नहीं करते हैं। टाइम आ गया अपने आप को चेंज करने का, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये व्हाट्सएप का जो ज़माना है बहुत लोगों को नेकेड कर देता है। अब तो वो टाइम नहीं है कि
कोई चीज़ हो गया किसी को पता नहीं चलेगा, रैदर आप ही को नहीं पता चलेगा, सबको पता चलेगा। एक ऐसा टाइम आ गया है। तो व्हाट्सएप के ज़माने में यदि आप में परफेक्शन नहीं है तो आपको पुल करने के लिए कोई भी आदमी बैठा हुआ है, यानी आपके सोचने के पहले व्हाट्सएप से इन्फॉर्मेशन कहीं भी चले जाएंगे। ये जस्ट मेरा एक स्टम्पर व्यू था कि सस्टेनेबल माइनिंग हम कैसे बनाएं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर नंदा साहब अपना व्यू दे करके गए कि नेट जीरो करना है। नेट जीरो करने का मतलब ये थोड़ी है कि माइनिंग नहीं करना है, माइनिंग हमें करना है, लेकिन माइनिंग का जो इल इफेक्ट है उसको हमको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करना है। ऐसे हमने भी प्लान किया एनसीएल में कि 276 मेगावाट यदि सोलर अदर देन फॉसिल यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो हम नेट जीरो हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं, जैसे मैं मॉर्निंग सेशन में भी बोला, कि जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, यदि हम इन्वायरमेंट की थोड़ी देर बात करें, वो आपका सबसे पहले ब्लास्टिंग से स्टार्ट होता है, उसके बाद में HST कंजम्पशन से स्टार्ट होता है। ये दो ऐसे खतरनाक पैरामीटर्स हैं और ये सब स्टार्ट होते हैं सॉल्विंग से। इस पर आज तक हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। हमारे पास में टेक्नोलॉजी ज़रूर है लेकिन हम पैशनेट नहीं है उसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी कुछ और होती है। आपको काम कॉन्ट्रैक्टर से कराना है, आपको काम स्वयं नहीं करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर को आपके लिए वरी करने की क्या ज़रूरत है। उसका आपका उनके साथ में करार हुआ है कि पर क्यूबिक मीटर कितना रेट में देना है, लेकिन आपने कभी करार नहीं किया कि माइनिंग करते समय SVM लेवल कितना जनरेट करेगा। वो आपने कभी राइडर लगाया नहीं अपने डॉक्यूमेंट में। तो ठीक है, तो जैसा आपने करार किया उस तरह का आपको प्रोडक्ट दे देता है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मोहिर बेसिन में रिजर्व आपके डीपर होते जा रहे हैं, तो टेक्निकल सस्टेनेबिलिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होगा जिसको आज से हम लोगों को सोचना स्टार्ट करना चाहिए। चेयरमैन साहब का मॉर्निंग में सेशन में कहना था कि तुम IPCC के बारे में तो बराबर बोलते हो, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो। तो मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा। मैं जाऊँगा CMPDL के पास में, CMPDL क्या करेंगे, वो कहेंगे कि RWE के पास में चले जाओ, जर्मनी के पास। करेक्ट। CMPDL बोलेंगे कि RWE जर्मनी के पास में इसका टेक्नोलॉजी, मेरे पास में कुछ नहीं है। तो फाइनली क्या करते हैं कि 80-20 के चक्कर में 20% को आप लिवरेज नहीं कर पाते, तो आपके लिए कौन प्लान करेगा सब चीज़ों को। और हमारी इनबिल्ट प्लानिंग की जो कैपेसिटी है खास करके कोल इंडिया में, वो एडिक्वेट नहीं है। एडिक्वेट इसलिए नहीं है कि हम चेंजेस के लिए तैयार नहीं है अपने आप को। CMPDL हमेशा कहते हैं कि हम प्लानिंग में कंट्री के या वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। यदि आप वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है तो IPCC को इम्प्लीमेंट कराने में आपकी भूमिका क्या है, ये हमको एक्सप्लोर करने का टाइम है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट भी किया कि हमारी एक टीम बने जो बाहर की कंट्री में IPCC जहाँ ट्रू सेंस में ऑपरेट हो रही है, ये नहीं मैं कहता हूँ कि कंट्री में होती नहीं है IPCC का एक ग्रुप आपने जयंत में देखा जो कि 20 किलोमीटर कोल का ट्रांसपोर्टेशन बाई रोड हुआ करता था, उसको एलिमिनेट करके हम लोगों ने बेल्ट से 10 किलोमीटर तक लेगा। एक ड्राइव है। लेकिन यदि ट्रू सेंस में IPCC की यदि हम लोग बात करते हैं, इसका मीनिंग ये है ओपनकास्ट माइन के कंटेक्स्ट में जहाँ हाई स्ट्रिपिंग रेशियो माइन है, वहाँ OB को आपको बेल्ट के द्वारा डंपिंग तक पहुँचाना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मिशन है, इसके लिए हम सबों को काम करना चाहिए। लेकिन मिशन में हम लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि हमारे ऊपर में प्रेशर नहीं है। हम तरह तरह की बातें करते हैं कि SVM लेवल इतना बढ़ गया, CPI इंडेक्स हमारा इतना बढ़ गया, लेकिन ट्रू सोल्यूशन निकालने के लिए प्रोबेबली आप भी तैयार नहीं है, हम भी तैयार नहीं है। तो इस रोड ब्लॉक को या माइंडसेट को हम लोग को चेंज करने का टाइम आ गया है, खास करके NCL के लिए, जहाँ की आने वाले दिनों में यदि आप डिपार्टमेंटल कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर मैं मान के चलता हूँ कि वो कभी भी हायर कैपेसिटी के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो आपके साथ में बिजनेस करने को आए हैं। वो आपके साथ में आपके पेन को 100% हरने के लिए कभी नहीं आए। ये कन्फ्यूजन में कभी मत रहिएगा। इस लाइन में हम लोग को सोचना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ का कल्याण होगा। अब रह गया कि NCL एज ए होल आप देखिएगा, मैं सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट रहा हूँ क्योंकि आज की जो सभा है वो NCL का भी सस्टेनेबिलिटी उसमें छिपा हुआ है। तो यदि हम NCL को सस्टेनेबल कंपनी बनाना चाहते हैं, जिस तरह से हमारे रिसोर्स डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, रिजर्व डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो मेन बेसिन में हम लोग को काम करने का टाइम आ गया और उसमें हम सबों को अच्छा काम करना चाहिए। कोयले का डिमांड रहेगा। एक और एस्पेक्ट है मैं जो बराबर बोलता हूँ कि हमारा एकमात्र डिसेलिंग प्लांट है।
डिसेलिंग प्लांट है तो जियोलॉजी के हिसाब से आपने प्लान किया। तो जियोलॉजी किस तरह की है? जियोलॉजी ऐसी है कि आप डिसेलिंग करते हैं, ड्राई बेनिफिसिएशन ऑफ कोल करते हैं। आप देखिए वहाँ के प्रोडक्ट का मार्केट में क्या डिमांड है। और मैं बताया भी कि एनसीएल की जोग्राफिकल लोकेशन इतनी बढ़िया है कि नॉर्थ के जितने भी पावर प्लांट हैं किसी भी रेट में आपका कोयला ले जाने को तैयार है। मैं बराबर देखता हूँ हमारा 250% से 300% तक रियलाइजेशन होता है ये ऑक्शन में। तो इससे बड़ा मार्केट किसी भी सब्सिडी के पास में नहीं है, ट्रस्ट में। तो इसको हम लिवरेज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा विज़न ये भी होना चाहिए माइनिंग में कि बीना जैसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे बीना में हमारा एक ऑलरेडी डिसेलिंग प्लांट है, तो डिसेलिंग प्लांट की हमारी कैपेसिटी या प्लांट ओल्डर हो चुके हैं, तो क्यों नहीं एक हम वहाँ डिसेलिंग प्लांट डालें। ये सब चीज़ों को हम लोग को डिफरेंटली सोचने का टाइम है। एफएमसी प्रोजेक्ट का देखिएगा एक बहुत बढ़िया ड्राइव है, जो कि यदि सस्टेनेबल माइनिंग करना है तो माइनिंग बाय ट्रक से आपको जीरो करना पड़ेगा। कोई ऑब्लिगेशन नहीं, किसी की ऑब्लिगेशन नहीं। लोग बोलते हैं कि नहीं, जो रिटेल वाले कस्टमर हैं उनको भी कोयला आपको देना है। तो रिटेल वाले जो कस्टमर हैं वो कंग्लोमरेट होकर के ऐसे कस्टमर बनेंगे जिनको कि रेलवे के द्वारा हम कोयला देंगे। तो उसके लिए आपके पास में इवैक्यूएशन कैपेसिटी चाहिए। इवैक्यूएशन कैपेसिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके दो तरह के कस्टमर हैं, जो पीट हेड पर एनटीपीसी हैं और दूसरे पावर प्लांट्स हैं, उनको कोयला आपको देना है। और बाकी जो नॉन पीट हेड प्लांट वाले कस्टमर्स हैं उसमें एक हैं कि पावर प्लांट्स वाले हैं, उनको रेल के थ्रू भेजना पड़ेगा। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कस्टमर्स हैं उनको कंबाइन करके हमको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि भाई एक ग्रुप आप बनाओ और हमसे रेल के द्वारा कोयला ले जाओ। वही एक विज़न यहाँ के लिए हम सबों को होना चाहिए, तभी सबों के जीवन में खुशहाली आएगी और तभी आप सस्टेनेबल माइनिंग कर सकेंगे। यदि मैं कुछ ज़्यादा बोला हूँगा तो आप मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. This was the plenary session of 5th edition of ICOMS with the theme of Sustainable Opencast Mining. What a wide range of topics, from market of sustainability to business development, to business diversification, to net zero transition, to the present real challenges before us. I thank all the distinguished speakers for their valuable inputs in the plenary session of ICOMS. I thank our CMD sir for his gracious presence in his busy schedule. As rightly said by you, sir, it is a time to introspect. It is a time to change the mindset. We have to think on man, machine and processes integration, then only the conducive environment for mining can happen. And sustainable mining can follow only with our rigorous focus on innovation, training and quality upgradation. I thank our DTO sir for conducting this session. I thank all the speakers. Now I request our CMD sir to please present the memento to Director Technical CMPDIL. I request all of you to please put your hands together. Thank you, sir. Now I request Director Simfer to please present the memento to Shri Devashish Dev sir, Professor IIT Kharagpur. Thank you, sir, for your valuable inputs. I request all of you to please put your hands together. Now I request our DTO sir, who has conducted this session, to please present memento to Professor S.S. Rai from IIT ISM Dhanbad. Sir, I once again request you to please present memento to Professor G.K. Pradhan sir from AKS University, Satna. I thank all of you from the audience for staying here till the end of this plenary session. मैं एक बार पुनः अपने CMD सर का धन्यवाद देता हूं
जिनकी अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति से इस प्लेनरी सेशन का मान बढ़ा है. I thank all of you from the audience too. I thank you, sir. After half an hour, we will stay here in this hall for the afternoon session, session 1 of 5th edition of ICOMS. I request all of you to please take your lunch and assemble here after half an hour. All our distinguished guests, area GMs, headquarter HODs, please assemble in Hall B for their lunch. I once again request all the delegates to please assemble in this hall for the afternoon session after half an hour. I also request all the speakers of session 1 to please submit their presentations to our technical team.